Okay, students, I hope you are revising, everybody. You have not started with the lecture yet. We'll wait for 5 more minutes for people to join. Any questions till that time, you can ask in the chat. We have time, बच्चे लोग. आज एक 1.5 वीक के बाद हुआ है अपना लेक्चर. थैंक यू सौरभ. मेडुला बाकी था, मेरे को याद ही नहीं. मेरे को लगा हो गया. अच्छा, लिम्बिक सिस्टम हो गया बच्चों लोग. लिम्बिक सिस्टम हो गया ना. हाँ बॉयज. सौरभ, लिम्बिक सिस्टम हुआ ना. हाँ सुजल. ओके. यस यस. हाँ. आज हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का रिवीजन और स्पाइनल कॉर्ड का. इसलिए मैंने बोला था लास्ट टाइम. यस, गुड मॉर्निंग शुभम. कि पूरा ब्रेन मुझे जहां तक पड़ा है उतना लर्न चाहिए. ठीक है. तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे तुम लोग. ओके. ब्रेन का दूसरा नाम डैश है, एनसेफेलॉन. ब्रेन के 3 पार्ट्स है. कौन से बच्चे लोग? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सुनाई दे रहा है सबको? फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोसेनसेफेलॉन.
मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम है रोमेंसेफेलॉन। प्रोसेंसेफेलॉन के तीन पार्ट्स हैं, राइनेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के दो पार्ट्स, क्लूराई सेरेब्रा, कॉर्पोरा क्वाड्राई जेमिना। हाइंड ब्रेन रोमेंसेफेलॉन के सेरेबेलम, पोन्स वेरेला, मेडुला। क्लूराई सेरेब्राई का दूसरा नाम कौन बताएगा मुझे? टेल मी द अदर नेम फॉर क्लूराई सेरेब्राई। यस बच्चों। यस अस्मिता। सत्यम। करेक्ट, सेरेब्रल पेडन्कल्स। नाउ which look rhinencephalon are also called as olfactory lobes. They are a pair of structures, and are they seen dorsally or are they seen ventrally? Give me the answer. Ventrally. Very good. Because dorsally they are dash covered by, yes Palak Parekh, आगे, covered by cerebrum. Okay. Each olfactory lobe shows the presence of two parts, an olfactory bulb and an olfactory stalk. Olfactory bulb has got cytons which are connected to the olfactory nerve coming from the nose, and the olfactory tract has got axons which are connected to parietal lobe. True or false? It is connected to parietal lobe. True or false? False. In dogs, it is large. It has a cavity called rhinocele. Then we spoke about cerebrum structure and function. 85% of the total weight of the brain, outer gray matter, inner white matter. Outer gray matter is called cerebral cortex, inner white matter is called cerebral medulla. It has right hemisphere and the left hemisphere. The two hemispheres are interconnected by a commissure called corpus callosum anterior, chino posterior splenium. बीच वाला part को बोलते हैं fornix. The gray matter shows the presence of many gyri and sulci which increase the surface area. Three of them are deep, which divide the cerebrum into four hemispheres. Each lobe is paired. Insula is the hidden lobe. फिर फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, अंदर की कैविटी को हम लोगों ने बोला था पैरासील, पैरासील के अंदर है cerebrospinal fluid. Masses of cytons very deep in the gray matter such that they dip in the white matter are called as the basal nuclei. फिर basal nuclei की examples दिए तो उनके function. Structurally, cerebrum has got three types of areas: sensory, motor, and association. Association areas are neither truly motor nor truly sensory. ऐसा अपने statement read किया था NCERT में से, बराबर. फिर फ्रंटल लोब के अंदर मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, फिर ब्रोकाज एरिया. अच्छा, ब्रोकाज एरिया किस चीज के लिए मैं भूल गया, देखो. ब्रोकाज एरिया किस चीज के लिए? हाँ गाइस. मोटर स्पीच. यस पलक, वेरी गुड. पलक पारेख, व्हाट डू यू मीन बाय मोटर स्पीच बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर स्पीच? ओके, ट्रांसलेट स्पीच या मूवमेंट ऑफ द टंग वर्ड्स बनाने के लिए. सत्यम, इट्स नॉट एन एसोसिएशन एरिया. बराबर. बराबर. इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो लोग मुझे आंसर दे रहे हैं. देन टू प्रोसीड. फिर हम लोगों ने डायनसेफेरॉन के बारे में देखा था. उसको कट करने के लिए, डायनसेफेरॉन को पढ़ने के लिए मैंने कौन सा व्यू प्रेफर किया था बच्चों, याद है तुम लोग को? कौन सा व्यू प्रेफर किया मैंने? सजाइटल. वेरी गुड. कैविटी को बोलते हैं डायोसील. डायोसील के अंदर है सीएसएफ. ऊपर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू कनेक्टेड है किसके साथ? पैरासील के साथ. और आइटरिस के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है? मेटासील के साथ. बराबर. और फिर इसके पास तीन पार्ट्स है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस.
एपिथैलेमस नॉन नर्वस है, हाईली वास्कुलर, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एपेंडाइमा सीएसएफ सिक्रीट करता है। फिर पीछे की तरफ पीनियल बॉडी है। फिर थैलामाई आर द बायलैटरल वॉल्स, उनके पास कोई न्यूक्लिया होते हैं, उसमें से एक हैवेन्युलर न्यूक्लिया कमीशर को बोलते हैं हैवेन्युलर कमीशर। It is connected to the reticular activating system, as a result of which it is the gatekeeper and the relay center. फिर hypothalamus is the floor, homeostasis, body temperature regulation, place where nervous and the hormonal centers will coordinate. Okay. अच्छा, एक और बात अभी मुझे बस याद आ गया, वो ये था कि ये 14 को तुम लोग का बायो का हम लोग ने एमसीक्यू का टेस्ट रखा है। ओके, यू विल हैव एमसीक्यू टेस्ट. It will be nervous coordination, brain part, up to brain part. Okay. इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन और जहाँ तक पूरा ब्रेन आएगा, एंड हार्मोनल में अप टू टॉट, जहाँ तक टॉट हुआ अप टू टॉट. तो इसका अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप लोग. ठीक है. एंड द डेट ऑफ द टेस्ट इज 14 जून. ओके. चलिए. अच्छा, फिर मिल गया ना मैसेज सबको? यस नो बताओ. दोनों चैप्टर्स के लिए आप अच्छे से एनसीईआरटी लर्न करोगे. चाहिए तो मेरे चैप्टर का ब्रेन तक का कहीं से भी एमसीक्यू जुगाड़ करके सॉल्व कर लेना. ठीक है. चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर पूछो, एमटीजी भी चलेगा. फिर मिड ब्रेन के हम लोगों ने दो पार्ट्स बनाए थे. ठीक है. एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, सेरेब्रल पेडंकल्स, फिर टेक्टम, चार बॉडीज, कॉर्पोरा, क्वाड्राइजेमिना, फिर सुपीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला, सुपीरियर फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, इंफीरियर फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. फिर वहाँ पे हमने रेड न्यूक्लिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा, डोपामिन, अल्जाइमर्स और सब दिखा था. फिर ब्रेन स्टेम की बात की. अच्छा, मैं भूल गया, ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है? गाइस, ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है? I'll take 5 more minutes, but I know it is very important to revise ब्रेन का पार्ट जितना हुआ है, वरना तुम लोग भूल जाएगा सब. और चलो. यस वाला मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला. मिड ब्रेन बराबर शेख सर. मिड ब्रेन मेडुला पॉन्स, मिड ब्रेन प्लस बराबर बराबर बराबर. फिर याद है ना, सेरेबेलम का पोजीशन बताया था, किसके नीचे, किसके पीछे, किसके ऊपर. वो सेंट्रल वाला वर्मिस, फिर दो लैटरल हेमिस्फीयर्स, फिर वो कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, वो सब बताया था. फिर पॉन्स के बारे में बताया था. ओके. अब मैं कंटिन्यू करूंगा विथ मेडुला ऑब्लांगेटा. लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताया था, वो भी रिवाइज करके. ओके. अच्छा, डेकसेशन वर्ड याद है तुमको? डेकसेशन.
किसी को याद है डेकसेशन? क्या था डेकसेशन, कोई बताएगा मुझे? सत्येंद्र, मिक्सिंग नहीं। क्या मिक्सिंग? कुछ भी। हाँ, क्रॉसिंग ऑफ द, विधि। हाँ, पलक पारेख और विधि जोशी, क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन to the right side of the body, the right side of the brain to the left side of the body. That is why the right brain controls the left part of the body and left side of the brain controls the right side of the body. Yes, Asmi. No. Medulla oblongata. The other name for medulla oblongata is, medulla oblongata का दूसरा नाम is myelencephalon. Okay. Now look at the medulla. This part. Can I say it is the last part of the brain, or I can say it is the posterior most part of the brain? And ये ब्रेन स्टेम का सबसे निचले वाला हिस्सा है. So we'll say that it is the lowermost part of the brain stem. And I'll say that it is present below the pons and above the spinal cord. ये नीचे जो है वो होगा स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर जो है वो है pons. So medulla oblongata, which is also called as the myelens myelencephalon, it is the lowermost part of the brain stem, or the posterior most part of the brain stem. ये pons के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में. अभी स्ट्रक्चरली it is made up of outer white matter and inner gray matter, and it shows the presence of many nuclei. Remember, it shows the presence of, many nuclei, and these nuclei we see they are classified as vital centers and non-vital centers. These vital centers, it has got a cardiac center which is called as cardiac acceleratory center and cardiac inhibitory center, which can increase your heartbeat and decrease your heartbeat. It has got respiratory center which sets up the rhythm of respiration. It has got gastric center. It has got center which controls the secretion of gastric juices. It also helps in the vasoconstriction and dilation of the blood vessels, as a result of which any injury to the medulla oblongata will cause immediate death. इसलिए कुछ कुछ बच्चों को ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ एक फ्रैक्चर के बारे में जिसका नाम है हैंगमैन्स फ्रैक्चर.
कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो वो जो रोप है ना, वो सेकेंड वर्टिब्रे का ओडोंटॉइड प्रोसेस तोड़ देता है और वो घुस जाता है सीधा मेडुला में, ऐसे। उसको बोलते हैं हैंग मैन्स फ्रैक्चर। फिर दूसरे जो सेंटर्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन वाइटल या रिफ्लेक्स सेंटर्स, दे कंट्रोल सलाइवेशन, swallowing, निगलना, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। ओके, ये सारे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस है वोमिटिंग वगैरह, कि अगर कुछ गंदा स्मेलिंग या कुछ पॉइजनस टाइप अगर आपके बॉडी में अंदर जाता है तो तुरंत मेडुला प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में वोमिटिंग कर देता है और पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ऐसा रहता है। ओके, एंड वी ऑलरेडी नो medulla oblongata has a fourth ventricle, and this fourth ventricle is called metacele, and the metacele ka roof has got posterior choroid plexus, and this posterior choroid plexus also secretes cerebrospinal fluid. So that was about the medulla oblongata. That the other name for the medulla oblongata is myelencephalon. It is the lowermost part of the brain stem. It is between the pons and the spinal cord. It has outer white matter, inner gray matter. It shows the presence of metacele with the posterior choroid plexus and ependyma that secretes cerebrospinal fluid. Okay, then the other thing is it shows the presence of vital centers and reflex centers, which control very important functions of the body, including your cardiac cycle and respiratory cycles. So injury to the medulla oblongata causes immediate death. एक और चीज, from the medulla arise 8 cranial nerves. From the medulla arise 8 cranial nerves. ये बाद हम लोग cranial nerves के टाइम पे पढ़ने वाले हैं। तो यह जहाँ पे एक पॉइंट आया है, it shows 8 cranial nerves, not pairs. Okay children, are you clear बच्चे लोग? Any questions here so that I can start with the spinal cord? सत्यम, अब देखो मैंने कट कर दिया पैर को, 8 कर दिया मैंने उसको, 8। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा क्रेनियल नर्व्स के टाइम। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हम लोग आगे पढ़ने वाले, तब नाम के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्रेनियल नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होता है। कह सकते हो? अरे पप्पा ने इतना अच्छा नाम रखा है तेरा और तू अपने आप को सालमन टाइफाई बनाता है। क्या रे? चल, लेट्स पढ़े आगे। सौरभ तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने चालू किया लॉकडाउन। मेरे को पूछ रहा है लॉकडाउन कब खत्म होगा।
अब जब होगा तब होगा, क्या करे बोल। तब तक घर पे बैठे बारिश का मजा ले। मुझे तो बच्चों क्लासरूम की बड़ी याद आ रही है कि कब मैं आऊँ चौक से पढ़ाऊँ। हाँ, मार्कर मार्कर भाई। नहीं बेटा। चलो, ये देखो, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। These are your vertebrae बच्चों। थैंक यू अफसर, ध्यान दो। देखो बच्चों, I'll come back to this. Okay, but before that, I'll just tell you about the location of the spinal cord. Okay, see, what's the spinal cord? तो अभी क्या क्या देखा है मालूम है हम लोगों ने कि ये, हाँ दिखाता हूँ बाद में। ओके, ये है आपका क्रेनियम। को पढ़िए आप। और ये जो ओपनिंग है एट द बेस ऑफ द स्कल, इट इज कॉल्ड foramen magnum. And as we have seen, the last part of your brain, the posterior part of your brain, is the medulla. Now the medulla oblongata continues down through the foramen magnum of the skull. And this continuation of the medulla through the foramen magnum of the skull results in the formation of the spinal cord. So अगर ये एक आदमी खड़ा है और आप उसको पीछे से देख रहे हो, तो आप बोलोगे पीछे से देख रहे हो मतलब डॉर्सली देख रहे हो। तो आप बोलोगे सर, medulla oblongata, I'm so sorry, spinal cord is mid dorsal in position. So spinal cord is present mid dorsally. It is the continuation of the medulla oblongata through the foramen magnum of the skull. And as it comes out, it passes through a canal called as the neural canal, which is formed by many vertebrae together.
As the spinal cord comes down, it gradually, like an ice cream ka cone, tapers and comes to an end at about the first or the second lumbar vertebra. It comes to an end at about the first or the second lumbar vertebra. देखो क्या क्या बोला मैंने, हाँ मैं लिख रहा हूँ उस बात. The spinal cord is present mid dorsal. Okay, the medulla oblongata comes out through the foramen magnum at the base of the skull and forms the spinal cord, which passes through the neural canal of the vertebral column and ends at about first or the second lumbar vertebrae. It gradually tapers. Clear? Clear everybody? Clear तो चलो. हाँ ना. Okay. So let's put it again. The length of the spinal cord is about 40 to 42 centimeters and the width is about 2 centimeters. Now, so that is why you will see that बच्चे लोग ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको आप बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी वर्टिब्रा, वर्टिब्रा एक को वर्टिब्रा, पूरे को वर्टिब्रल कॉलम. और एक ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन में सबको यहाँ पे देखो ये पास हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड. आप सोचते रहोगे फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में से बीच बीच में से क्या बाहर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये स्पाइनल नर्व्स. ओके, फिर ये एक वर्टिब्रा है देखो, ये वर्टिब्रे का फोरामिना है और उसके अंदर देखो ये कौन है, स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे अब आप देखोगे दो वर्टिब्रे के बीच में ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है और देखो ये है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जिसमें से स्पाइनल नर्व बाहर आती है. तो जब स्लिप डिस्क होती है और ये डिस्क अगर बाहर सरकेगी तो दोनों वर्टिब्रा मिलके स्पाइनल नर्व को चेपेगी, इसलिए वो दुखता है, स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं उसको, है ना. आई बात समझ में? इसलिए देखो गले में और पीठ में वो पट्टा पहनते हैं. ये देखो दो वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज है जिसको पूरे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, सिम्फाइसिस बोलते हैं, बराबर. और दो वर्टिब्रे के बीच में से स्पाइनल नर्व बाहर आ रही है, तो जहां से बाहर आ रही है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. अब वो अगर डिस्क हर्निएटेड हो जाएगी या थोड़ी बाहर आ जाएगी तो दोनों वर्टिब्रे मिलके वो स्पाइनल नर्व को प्रेस करेंगे,
तो जो स्पाइनल नर्व जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ पे दुखता है, फिर लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, टिकलिंग होता है, तो उसको कोई स्लिप डिस्क बोलते हैं। जो नेक में, नेक के वर्टिब्रे में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है ऐसा। ज़्यादा करके अपने इंडियंस में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा होता है, रास्ते इतने अच्छे ना, और बाइक भी अपन आराम आराम से चलाते हैं इसके लिए। देखो आगे ना, ना हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रोटेक्शन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। तो फॉर दैट लेट अस सी, तो अभी तक क्या क्या कवर किया स्पाइनल कॉर्ड का मैंने? वी हैव कवर्ड अबाउट द location of the spinal cord. The spinal cord is present mid-dorsally. It is the continuation of the medulla oblongata through the foramen magnum of the skull. It passes through the neural canal of the vertebral column. It gradually tapers down posteriorly and comes to an end at the first or the second lumbar vertebra. It is about 40 to 42 centimeters in length and about 2 centimeters in thickness. It passes through the neural canal of the vertebral column. So जैसे बच्चे लोग हम लोग ने बोनी प्रोटेक्शन देखा था ब्रेन के लिए, वैसे ये वर्टिब्रे का बोन। क्या भाई? चलो, ये वर्टिब्रा है, तो ये ड्यूरामेटर, ये अरैक्नोइड है, और ये पिया है। सब सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस देखो बच्चा, एक डिफरेंस देखो। कौन बताएगा मुझे डिफरेंस? जिस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो ड्यूरामेटर के ऊपर भी एक स्पेस है, उसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, which was not present in the brain. But the spinal cord, which is surrounded by the same three protective meninges, dura, pia, arachnoid, but there is an additional space which is called as epidural space. This epidural space contains fatty and connective tissues along with blood vessels. Fatty and connective tissues along with blood vessels. So this is one difference. Brain does not have epidural space. Spinal cord has an epidural space which is filled with fatty and connective tissues and the blood vessels. आगे समझ में आया यहाँ तक बच्चे लोग? ये पॉइंट समझा क्या बोला मैंने? यस स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। So we have, now I'm teaching external structure of the spinal cord.
The spinal cord shows the presence of a dorsal fissure and a ventral fissure. The spinal cord has a ventral fissure and a dorsal fissure. The ventral fissure is deeper. The ventral fissure is deeper than the dorsal fissure, and through this fissure passes blood vessel. Here the external structure of the spinal cord. The spinal cord shows the presence of two swellings. Swelling in the neck region, which is called cervical swelling. Okay, and the second swelling is called as the lumbar swelling. From the cervical swelling, nerves are sent to the hands, forelimbs, and from the lumbar swelling, nerves go to the hind limbs. Second point. So the spinal cord shows the presence of two swellings: cervical swelling in the neck region and a lumbar swelling. The cervical swelling sends nerves to the forelimbs, and the lumbar swelling sends nerves to the hind limbs. The spinal cord is covered by dura mater, arachnoid mater, and the pia mater. Look at this red one. This is the pia mater. So even though the spinal cord comes to an end, does the pia mater end or does it continue? Does the pia mater end or does it continue beyond the spinal cord? Continue. And this continuation of the pia mater beyond the spinal cord is called phylum terminale. And this phylum terminale helps to anchor anchor the spinal cord with the coccyx bone. Okay, so phylum terminale, third point बताया. It is the continuation of the pia mater beyond the spinal cord, and it helps to anchor hold the spinal cord within the vertebral column. 3.1. Externally, the spinal cord shows the presence of a dorsal fissure and a ventral fissure. The ventral fissure is deeper than the dorsal fissure and it shows the presence of a blood vessel. The spinal cord shows the presence of two swellings: cervical swelling and lumbar swelling. Cervical swelling for the forelimbs, lumbar swelling for the hind limbs. So cervical swelling sends nerves to the forelimbs, lumbar swelling sends nerves to the hind limbs. It is covered by the three meninges. The pia mater continues beyond the spinal cord and it is called as the phylum terminale. The phylum terminale helps to anchor the spinal cord in the vertebral column. Next one. Okay. Now look at the lumbar swelling. Look at the lumbar swelling. If you look at the lumbar swelling, guys, you will see that the tip of the lumbar swelling, the tip of the lumbar swelling is a conical projection. Just like जब हम लोग
कॉर्नेटो का आइसक्रीम खाते हैं ना, तो कोन के एंड में क्या आता है बताओ मुझे। जब हम लोग कॉर्नेटो का आइसक्रीम खाते हैं तो कोन के एंड में क्या आता है? हाँ बच्चों, चॉकलेट आता है। तो सिमिलरली ये जो लंबार स्वेलिंग है, उसके एंड में देखो क्या आ गया। उसको बोलते हैं कोनस मेडुलैरिस। कोनस medullaris. So the tip of the lumbar swelling, there is a conical part which is called conus medullaris. एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वूम में, जो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं तो वो लोग चेक करते हैं इस कोनस मेडुलारिस को, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट डिफेक्ट है जहाँ पे कोनस मेडुलारिस ऐसे बीच में से स्प्लिट करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। इट इज वन ऑफ द माइलस्टोन्स which shows that the nervous system का development is improper. It's called spina bifida. Okay, there's some extra information for you. Now, from the lumbar swelling, arise from the lumbar swelling arise a bunch of spinal nerves which look like the tail of a horse, and that is called as cauda equina. From the lumbar swelling arise a bunch of spinal nerves which look like a horse's tail, and that is called as the cauda equina. So ये पूरे पॉइंट्स थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट डॉर्सल फिजर, वेंट्रल फिजर। सेकेंड पॉइंट सर्वाइकल स्वेलिंग, लंबार स्वेलिंग। तीसरा फाइलम टर्मिनल। चौथा कोनस मेडुलारिस। पांचवा कॉर्डा एक्विना। क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स बच्चों? यस स्टूडेंट्स। स्पाइना बाइफिडा वो कंडीशन है जहाँ पे कोनस मेडुलारिस के यहाँ पे आपको एक ऐसा स्लिट दिखाई देगा, उस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है जिससे अपने को पता चलता है कि फीटस के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। ओके विशाल, चलो सब लोग ये स्लाइड पढ़ेंगे सब लोग। एक मिनट हाँ बच्चों, ये स्लाइड पढ़ेंगे सब लोग अभी। दो स्लाइड पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, ये दो स्लाइड पढ़ेंगे आप लोग।
ये हो गया स्लाइड. नेक्स्ट. Next. Now I want to discuss the internal structure of the spinal cord. Okay. देखो. So when you take a TS of the spinal cord, TS means transverse section. Okay. In the center, देखो diagram में दिया है. In the center, it shows the presence of a central canal. And this central canal is filled with cerebrospinal fluid. अब यहाँ पे मेरे को कोई concept clear करना है, ज़रा ध्यान देना मुझे. Okay. कहाँ है मेरा वीडियो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा. हाँ. See. Okay. देखो मुझे. ये वर्टिब्रा है. क्या है ये? वर्टिब्रा. पूरा वर्टिब्रल कॉलम. तो ये जो कैनाल है, ये ये जो कैनाल है, ये न्यूरल कैनाल है. ये न्यूरल कैनाल. सो ये न्यूरल कैनाल किसका कैनाल है? वर्टिब्रल कॉलम. और इस न्यूरल कैनाल में से क्या पास हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन है ये सब, वर्टिब्रा. अब जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो देखो ये रिफिल में भी एक कैनाल है ना. इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल. और उसके अंदर का जो लिक्विड है, इसको बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो द वर्टिब्रल कॉलम is the canal of the vertebra. The neural canal is the canal of the spinal cord. And the neural canal is filled with cerebrospinal. So central canal is the canal of the spinal cord. It is filled with cerebrospinal fluid. So the vertebrae have a vertebral canal through which passes the spinal cord. In the center, the spinal cord is a central canal which is filled with cerebrospinal fluid. समझा? चलो. Everybody? Okay. So let's put it back. Now, point wise. Hmm? So when you take a transverse section of the spinal cord, we come to know that it shows a butterfly shape appearance. Second, it shows the presence of a central canal.
The central canal is lined by a single layer of cells called ependyma cells, and these ependyma cells, they secrete cerebrospinal fluid. So in the center there is a central canal. The central canal is lined by a single layer of ependyma cells, and these ependyma cells, they secrete cerebrospinal fluid. Further, it shows the presence of outer white matter and inner gray matter. The inner gray matter is made up of cytons, and the outer white matter is made up of medulated nerve fibers. So it shows the presence of an outer white matter and inner gray matter. The outer white matter is made up of medulated nerve fibers, and the inner gray matter is made up of cytons. Now I'm going to discuss the inner gray matter. उसके पहले मैं जरा inner gray matter को highlight करता हूँ. ये जो भी मैंने पार्ट हाईलाइट किया ना स्लाइड पे, ये ग्रे मैटर का पार्ट है. फोर्थ पॉइंट, द इनर ग्रे मैटर shows the presence of columns which are called as horns. It shows the presence of horns. So the gray matter has a pair of dorsal horns, a pair of lateral horns, and a pair of ventral horns. CSF, well, central canal lined by ependyma. So it has a pair of dorsal horns, a pair of lateral horns, and a pair of ventral horns. The dorsal horns continue out as dorsal roots. The ventral horns, they continue out as the ventral root. Then, then, then the dorsal horn continues out as the dorsal root, and the ventral horn continues out as the ventral root. The dorsal root and the ventral root unite. The dorsal root and the ventral root unite, and they result in the formation of a
pair of spinal nerve to your left and the right. So once again, internally the spinal cord has inner gray matter, outer white matter. The inner gray matter has a pair of dorsal horns, a pair of lateral horns, and a pair of ventral horns. These horns continue out as a pair of dorsal root and a pair of ventral roots. And the dorsal root and the ventral root unite, resulted in the formation of the spinal nerve. Now, चलो यहाँ पे ध्यान देंगे बात कि अगर ये सर ने ग्रे मैटर बनाया है ऐसे, तो उसके आजू बाजू का जो पार्ट है जिसको मैं ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ये सब ये वाइट मैटर है। और ये ग्रे मैटर की वजह से भी देखो वाइट मैटर भी देखो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये डोर्सल वाइट मैटर हो गया, ये लैटरल वाइट मैटर हो गया, और ये वेंट्रल। इसको बोलते हैं डोर्सल वाइट मैटर को बोलते हैं डोर्सल फ्यूनिकुलस। इस साइड वाले को बोलते हैं लैटरल फ्यूनिकुलस, और इसको बोलते हैं वेंट्रल फ्यूनिकुलस। So the presence of gray matter divides the white matter into three broad areas: anterior, जिसको बोलेंगे ventral funiculi, posterior मतलब dorsal funiculi, and दो lateral funiculi। अब important बात सुनो, ये जो फ्यूनिकुलस होते हैं इसके थ्रू डिसेंडिंग एंड असेंडिंग नर्व ट्रैक पास होते हैं, इसके थ्रू डिसेंडिंग एंड असेंडिंग नर्व ट्रैक्स पास होते हैं। ये कुछ डायग्राम बना मैं दिखाया, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक्स पास हो रहे हैं। ओके, बताता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, ये समझो आपका ब्रेन, ये ब्रेन, and the highway to your brain is the spinal cord, and this is your spinal cord, और ये है आपका ग्रे मैटर। so जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, उसको हम लोग बोलेंगे, ये वाले को डोर्सल फ्यूनिकुलस, इसको बोलेंगे लैटरल फ्यूनिकुलस, और इसको बोलेंगे वेंट्रल फ्यूनिकुलस।
through the dorsal funiculus, pass the ascending tracts. What's the tracts? Ascend, which carry sensory information to the brain, and through the lateral and the ventral funiculum passes the descending tracts, and these descending tracts will be the motor tracts. So spinal cord is like a highway to the brain, carrying information away from the brain and carrying information towards the brain. Got it? So we refer our slide, and we'll see that through the cut section we have shown different tracks going. So ascending tracks are sensory, and they conduct sensory impulses to the brain, and they are present in the dorsal funiculi. Whereas the descending tracks, they are motor in function, and they carry motor information from the brain to the spinal cord and further to the other motor organs, and they are located in the ventral and the lateral funiculus. So the functions of the spinal cord are: it helps in the conduction of impulses from the brain to the other parts of the body and from the other parts to the brain, and majority of your reflex actions, आपने school में भी पढ़ा होगा, majority of your reflex actions are controlled by the spinal cord. So it gives a lot of time for the this thing, your brain to rest. ये सब छोटे छोटे काम उसमें से निकाल दिए जाते हैं brain में से. Okay, so with this we are finished with the spinal cord, and when we finish with the spinal cord, it means that we are finished with the central nervous system. सुना मैंने क्या बोला सब? Yes guys. चलो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुआ. आगे बढ़ने से पहले अरे क्या सो गए बच्चे लोग, तुम लोग सब लोग? हाँ,
ओके, कोई क्वेश्चंस? ये तुम लोग अपना आपस में पटेल बंद करो, वरना सबके अभी यहाँ से इंटरनल तुम लोग के प्राइवेट कन्वर्सेशन में बंद ही कर रहा हूँ, ध्यान दो। सौरभ, सत्यम, तुम लोग का अंदर अंदर प्राइवेट मैसेजेस बंद कर दो। इधर लोगों को पढ़ने नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में तुमको मिल रहा है, तो तुम लोग भंकस कर रहे हैं अंदर के अंदर। चलो, मैं इसीलिए रुका हूँ कि मैंने CNS खत्म किया, मेरे को नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लेना, फिर मैं इंट्रोडक्शन करूंगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अरे तेरे नाम से कोई लड़का अगर मीटिंग में है, तो तू कौन सा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, रहने देना, तेरे नाम से क्या फर्क पड़ता है तेरे को? सत्यम, होगा तो होगा। तू कौन सा मोदी जी है, या वो कौन सा मोदी जी है जो तुम्हारे नाम से कुछ जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा पंगा होने वाला है? उसको थोड़ा जिंदगी जीने का, उसको ऐसा लग रहा है ऐसा उसने किया तो बहुत बड़ा वो काम करेगा। सोहेल की जान एक ही चीज पे अटकी हुई है कि सर ये कौन सा लेक्चर है, नीट का है, 12th का है, कैसे पढ़ता हूँ मैं? तो क्या पहली बार बैठा है मेरा लेक्चर सोहेल? मैं दोनों चीज साथ में लेता हूँ ना, MCQs भी कवर करता हूँ मैं साथ में। ए, अकेले अकेले आम खा रही है प्रीति, हम लोग को भी देना, अकेले अकेले आम खा रही है तू। क्या रे प्रीति? चलो, लेट्स बढ़े यार। ओके, so when we talk about the peripheral nervous system, when we talk about the peripheral nervous system, structurally I can divide into two parts: cranial nerves, which are 12 pairs, and they arise from the brain, and spinal nerves, which are 31 pairs, that arise from the spinal cord. Functionally, I can divide into three parts: somatic, autonomic, and enteric.
Autonomic will be divided to sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. एंटेरिक डिवीजन वो होता है जो आपकी गट को कंट्रोल करता है, गट पेरिस्टालसिस। इसको आप डाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हो, और बैचिस प्लेक्सिस एंड मेजनर्स प्लेक्सिस। तो अभी के जो कुछ लेक्चर्स वो पहले आपको क्रेनियल नर्व सिखाया जाएगा, स्पाइनल नर्व सिखाया जाएगा और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सिखाया जाएगा। ओके, लेकिन ये सब बात करने से पहले आज के जो 10 मिनट बचे हैं उसमें आपको नर्व क्या होता है उसके बारे में बताओ। या आप समझो जो मेरे साथ 11th में बैठे हैं उनको मैंने एक बात बताया था, वो बात रिवाइज हो कि एक तो होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, और इस एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा। और एक्सॉन और न्यूरिलेमा को दोनों को मिलके मैं बोलता हूँ नर्व फाइबर। बराबर, याद आया बच्चों लोग? नर्व फाइबर। ये स्टूडेंट्स, नर्व फाइबर। आप देखो आगे, बेटा ये अल्फा इंटरफेरोन यहाँ पे कहाँ से आ गया? वो तो एंटीवायरल प्रोटीन है, समेशन ऑफ इम्पल्स आगे आएगा। सल्मोनेला, अल्फा इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन से हेल्थ एंड डिजीज में आएंगे। अब देखो, ये एक नर्व फाइबर है, ये कौन है? नर्व फाइबर। ये दूसरा नर्व फाइबर, तीसरा नर्व फाइबर है, ये चौथा नर्व फाइबर। नाउ द नर्व फाइबर्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। Okay, this is called as the endoneurium. अब देखिए, इस हर एक इंडिविजुअल नर्व फाइबर के अराउंड एक एंडोन्यूरियम। अब एक बंडल बन गया, इसको बोलेंगे fasciculi ऑफ नर्व फाइबर्स। उसके ऊपर there is पेरिन्यूरियम। ऐसे एक fasciculus है, इससे और कुछ बनाता हूँ देखो, नर्व फाइबर नर्व फाइबर नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के ऊपर एंडो 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 एंडो, बंडल बन गया। ये हो गया उसका सबका पेरिन्यूरियम पेरिन्यूरियम पेरिन्यूरियम। तो अब ये एक बंडल है कि बहुत सारे बंडल है? बहुत सारे बंडल है। अब उसके ऊपर एक कॉमन कवरिंग आ गई, उसको बोलेंगे एपिन्यूरियम। ओके, और इस पूरे गुच्छे को हम लोग बोलेंगे
ध्यान में रखना। अब ये नर्व अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपके इफेक्टर्स हैं जैसे मसल्स और ग्लैंड्स हो गए, और ये आपके रिसेप्टर है जैसे आपके आईज वगैरह। अगर एक नर्व के पास सिर्फ सेंसरी बंडल्स है तो सिग्नल को सिर्फ रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेके जाएगी। अगर किसी नर्व के पास सिर्फ मोटर बंडल्स है तो इंफॉर्मेशन सीएनएस टू इफेक्टर्स लेके जाएगी। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी होती है जिनके पास दोनों टाइप के बंडल होते हैं, so they can carry information to the CNS as well as they can carry information away from the CNS. So nerves are of three types: those which are purely sensory like A, those which are purely motor like B, and those which can carry the information in both the directions. Those which can carry in both the directions are called as mixed nerve. So a nerve can be sensory, motor, or mixed. So the peripheral nervous system consists of the nerves which are coming from brain and spinal cord. That is the structural division. From the brain, cranial nerves; from the spinal cord, spinal nerves. And the nerves are of how many types? Three: sensory, motor, mixed. तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपको पूरे ब्रेन के 12 पेयर्स दिखा रहा है जो आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के सारे 12 पेयर्स दिखा रहा है, CN से लेके CN1 से लेके CN12 तक। और ये नीचे वाले जो सारे नर्व्स हैं ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और इसको भी अपन दोनों चीज़ को अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खत्म किया, और 14th को आपका टेस्ट है। समझे मेरी बात? 14 को आपका क्या है? टेस्ट है। और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी कि क्या कोशिश है, कि मेरे अंदर में नहीं दिखाई दे रहा डॉक्यूमेंट्स बायोलॉजी। एक मिनट बच्चों, आप लोग फिंगर टिप्स सॉल्व करोगे कि डॉक्टर आएगी फिंगर टिप्स ना? ये फिंगर टिप्स में 11th स्टैंडर्ड में, और ये आ गया न्यूरल कंट्रोल। ये मैंने सेंड किया आपको फाइल सब MCQ सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें आंसर मार्क होगा तो उसको कट सिलेक्ट करके उसको निकाल के फिर सॉल्व करना। समझा? सबको मैंने सेंड किया। अच्छा नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट गया। एक मिनट, एक मिनट। सबको मिला फाइल कि नहीं मिला भाई? चलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो SDC एडमिन को चला गया, जरा सर से ले लेना वो फाइल। ये तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। कॉपी पेस्ट,
आया? आएगा आएगा, रुक जाएगा। अपलोड हो रहा है। शांति रहो। आ गया अभी सबको? ये फाइल में से आप ब्रेन वगैरह के लिए एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ओके, मैंने एवरीवन को सेंड कर दिया भाई। अगर इसमें आंसर्स मार्क होंगे मेरे, तो उसको सिलेक्ट करके अनसिलेक्ट कर देना, फिर सारे आंसर्स चले जाएंगे, फिर तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, और अगले लेक्चर में ब्रेन और इसके ऊपर डाउट्स पूछेंगे आप। नहीं है? अरे भेजा तो था सबको, किसी को भी नहीं आया। कोई एवरीवन करके भेजा था भाई। सोहेल तुझे आ गया? चलो सोहेल को आ गया, सोहेल तू शेयर करना भाई। व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम सब पढ़ के आना। बाय बाय। थैंक यू।